శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. సంకల్పం చేయించబోతున్నారు. అందరూ శ్రద్ధగా విని అదే విధంగా పలుకుదాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవం కానీ పేరు నమోదు చేయించుకున్నటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం. మమ గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, ధర్మపత్ని పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర
कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये। सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்பனுடைய சுவாமி திரு கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியக வச்சனம் மற்றும் ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடங்க உள்ளது. உலகில் வாழும் உயிர்கள் அனைத்திலும் அந்தர்யாமியாக விளங்குபவன் திருமலையில் விளங்கும் திருமகள் கேள்வன் என்ற திருவேங்கடவன். அவரை துதைக்க நினைக்கும் போதே கொண்டல்லோ நிலக்கொன்னா அல்லது பிரம்ம கடிகின பாதமும் நம் நினைவுக்கு வராமல் இருக்கிறதா? பிரம்ம மொக்கட்டே என்ற அந்த புகழ் பெற்ற பாடலில்தான் மேற்கண்டபடி உணவோ உறக்கமோ அடிப்படை தேவைகள் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே சமம்தான். அனைவரின் இதயத்திலும் நீக்கமர விளங்குவது வேங்கடவன்தான் என்று அறுதியிட்டு கூறுகிறார். முதலில் அவர் திருமலையை பற்றி புகழ்வதை பார்ப்போம். அதிவோ அல்லதிவோ அனைவரும் அறிந்ததே அல்லவா? இதோ பாருங்கள், பிரமிக்க வைக்கும் இந்த உயர்ந்த மலையை பிரம்மன் முதலியோருக்கும் அரிதானது, அனைத்து முனிவர்களுக்கும் இருப்பிடமானது, தேவதைகளுக்கு இருப்பிடமான தங்கமயமான சிகரங்களுடன் பிரகாசிக்கும் இந்த மலையை பார்த்து ஆனந்தம் அடையுங்கள். இம்மலையே புருஷோத்தமனது இருப்பிடம். புனிதமானவற்றில் எல்லாம் புனிதமானது என்று பேசப்படுகிறது. கொண்டல்லோ நிலக்கொன்னா கோனடி ராயுடு வாடு, அதாவது திருமலையில் அருகிலுள்ள புஷ்கரணிக்கு அரசன். அங்கே இருப்பிடம் கொண்டு மலை போல் அளவில்லா வரங்களை தருபவன். மண் பாண்டம் செய்யும் குருவர்த்தி நம்பிக்கும் தொண்டைமான் சக்கரவர்த்திக்கும் கேட்டதை தந்தவன். पुदा पुदमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मृतां दृसा पुदा ब्रह्म पवित्रेण पुदा सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप पशुवापो नमापो तमाप सम्राडापो विराडाप सराडाप छन्दाक्षापो ज्योतिक्षापो यजुक्षाप सत्यमाप सर्वा देवतापो पूर्भस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गा चरित्रनावाहयामि यदेशतं व्रणे सहस्रं ज्ञापदाविदा पुत्रा तेभ्यो नन्द्रस्यतादु विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तमतस्सुस्या वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रोतस्त्रोत्तराभरण उपवीत पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः विमेक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणानिर्विघ्नेन विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं च दर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं ज्याप्तिं शृङ्गेतं शूष्परदवाहनं पूर्वाषोडोद्भवं देवं दक्षिणाकुमच्चेत् आग्नेयस्माद्दामेत्ताशे दातं यतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिरत्तां प्रेषां दिशाभिधानामनादि यामे शस्तान् दन्दान् दातु ओं भूः पद्माकारणे विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि तत्तत्सेन सेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतः राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासीता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे ज्ञानान् परिसमाप्य च कुर्यात् विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरङ्गनाथः पुण्यः पुण्यहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व तस्य प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायितयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि
शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इत्यः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुर्चक्रमे पृथिव्याः सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि रेपदं समूढमस्वागुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतो वृतानि वसुसि इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोद्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तरस्य द्रविणोदासरस्य प्रेंसते द्रविणोदा वीरवदिविषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपविशम् यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेति यत्र धन्यं वसेति तावत् गुरुर्यत्कार्ये स्यात् पुण्याः यव गुरुते ओं भूः अथ पुरोक्तमिष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिसराश्रोत्तन्त्रविषित्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रोर्धस्वास्नः पूषा शुवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्टेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अति उरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिसराश्रोत्तन्त्रविषित्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु करुणे स्वस्ति कर्मणस्तिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु करुणे स्वस्ति कर्मणस्तिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभ्येन संसद्यां मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीयं सदस्वीराः ओं भूः अतिभ्रोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिसराश्रोत्तन्त्रविषित्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि रुद्धिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणुद्धिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणुद्धिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामयो भोस्थान ऊर्जिदादना महेरणाय चक्षुषे योपस्पदमर्धस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्माहरङ्गमावो शक्ष्याय जन्मधा आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णास्य पावकाय जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्नीया गर्भं दद्रेविरूपास्तान् आपसग्स्वना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोता सपनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा खलुमृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यां गम्भीरण्मयं तेन ब्रह्म विदा वयं पूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्सुनिते सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणः समीक्षा यमो राजा प्रमणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषणं षण्णो अस्तद्विपदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान् दिशमासाः पितरा मार्जयन्तां प्रदेशान् दिशग्रहाः पशवः मार्जयन्तां उदीहीचान् दिशाभोषधयो वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वाजाम् इति यज्ञः संवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथोदराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशानिमिव भवानः यत्ते महे प्रदन्नो शश्वत्सने तद्वदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पदे सुग्मया सुं सदा ते सक्षेमहि शरण्यागात्मत्याः आवह क्षेमते गेवरन्नो यूजं पातस्तस्तभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखास सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानि दोष्यन्तो तमः कृतं वत्सति पीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं वर्णायन्माय सक्सेनाय नमः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णायन्माय सक्सेनाय नमः यदा भासा गुडोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च திருமலை வாசனே ஆதிசேஷனே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே,
மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்போது சேவிக்க இருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல் என்கிற கைங்கரியம். அதாவது தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியமே அங்குரார்ப்பணம் என்கின்ற கைங்கரியம். பரந்தாமனான ஸ்ரீ ஹரியை குறித்து நைம சாரண்யவனத்தில் சவுனக்கர் முதலான மகரிஷிகள் ஒரு அற்புத யாகத்தை தொடங்கினர். அது காண வந்திருந்த சுத்த முனிவரை பார்த்து உரைய ஆடலின் நடுவில் சவுனக்கர் கேட்டார், மகாபானுவரே, இந்த பாத்திரத்தில் எனக்கு போதிய இடமில்லை. என் மீது கருணை கொண்டு அதிக இடவசதி உள்ள இடத்திலே என்னை சேர்ப்பிக்குமாறு வேண்டுகிறேன் என்றது மீன். ஆச்சாரியமடைந்த அவர் அந்த மீனை பாத்திரத்திலிருந்து எடுத்து குடத்தினில் உள்ள நீரில் விட்டார். மறுபடியும் அந்த மீன் தன் உருவை பெரிதாக்கி கொண்டு குடம் போதவில்லை என்று கூறியது. அவர் அதை எடுத்து சென்று ஒரு தடாகத்திலே விட்டார். அங்கும் அந்த மீன் தன் உருவத்தை பெரிதாக செய்து கொண்டு போதிய வசதி உள்ள இடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்குமாறு கேட்டது. வியப்பு மேலிட்டவராய் அவர் மீனை எடுத்து சென்று சமுத்திரத்திலே விட்டார். அடுத்த க்ஷணம் 100,000 யோஜனை விஸ்தீர்ணமுள்ளதாக அந்த மீன் தன் உருவத்தை பெரிதாக்கி கொண்டது. அதன் அற்புத தோற்றத்தை கண்ட அவர் தாங்க முடியாத வியப்பு கொண்டவராய் மேனி சிலிர்க்க இரு கைகளையும் கூப்பிக்கொண்டு, ஹே பிரபோ, தாங்கள் பரந்தாமனே என்பதை உணர்கிறேன். எக்காரணமும் பற்றி இந்த மாய தோற்றத்தால் என்னை வியப்பட செய்கிறீர்கள் என்று பிரார்த்தித்தார். மச்சத்தின் உருவெடுத்திருந்த அந்த மகாவிஷ்ணு அவரை பார்த்து, அன்புக்கு உரியவனே, இன்றிலிருந்து 7வது நாள் கடல் பொங்கி இவ்வையகம் முழுவதையும் சகல ஜீவராசிகளோடு அழிக்கப் போகின்றது. அந்த சமயத்தில் உன்னை நோக்கி ஒரு படகு நெருங்கி வரும். சகல ஔஷதிகளுடனும் ஜீவ பிந்துகளுடனும் அதில் நீ ஏற்றுக்கொள். சப்த ரிஷிகளோடு கூடிய உன்னை தாங்கியவாறு படகு பிரளய நீரிலே அந்த பிரம்மனுடைய இரவு பொழுது முழுவதும் சுற்றி வரும் என்று கூறினாராம். பக்தர்களே, இதோ அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் முடித்தார். இனி அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பூஜையை கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். அந்த வைகான சாகமம் படி அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனை ஆவாகம் செய்து பூஜிப்பதே ரக்ஷா பூஜை. அதன் தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தையும் சேவிக்க இருக்கிறோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. ஓம் ஸ்ரீ வஹவ்யாம் ஷண்ணான சத்தாந்தம் சௌர்ஜோத்தாம் ஸ்வயம்பரக்ரேம் தேம் தாயா நாகராஜமாவாஹயாமி சர்ஷேஷமாவாஹயாமி சேஷமாவாஹயாமி ஆனந்தமாவாஹயாமி. பிரசரதேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, இதமார்घ्यं சமர்ப்பயாமி. சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோ வேதாம் விஸ்வநாபக ஸ்வஸ்தி தேவ்யை திருநர்மணः ஸ்வஸ்தி பூஷாமசரோதாதன ஸ்வஸ்தி द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामे सोमं स्वस्ति भुवनस्तेस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः द्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पथ्येरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इदे कृधि स्वस्ति बन्धा मुनितिरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनःताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाम वारुहेम अम्हों च माङ्गिर सञ्जयं च स्वस्त्याः त्रयं मनसा दाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் முடித்து ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்திற்கு அர்ச்சகர் சுவாமி வந்துள்ளார். ரக்ஷா பந்தனம் என்றால் அந்த பகவானுக்கும் அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்து பின்பு அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது வலது கரத்திலே எந்தவித விக்னமும் இந்த பூஜையில் வராமல் இருக்க அவரது கரத்தில் கூட அந்த ரக்ஷத்தையை
ஏந்திக்கொண்டு இந்த ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்ய உள்ளார். இதை நாம் திரையில் இருந்தே தரிசித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அக்னி தேவன் பகவானுடைய அவதாரங்களை மேலும் கூறலானார். ஹிரண்யாக்ஷன் என்ற ஒரு அசுரன் இருந்தான். அவன் பாதாள லோக்கத்தில் பதுங்கி இருந்த அசுரர்களுக்கு தலைமை பூண்டு தேவர்களை துன்புறுத்தலானான். அவன் கொடுமைகளை தாங்க மாட்டாத தேவர்கள் ஹரியை சரணடைந்தனர். அவரும் தேவர்களை ரட்சிப்பதாக அபயம் அளித்தனர். பன்றி உருவம் கொண்டு பாதாள லோக்கத்தை அடைந்தார் பரந்தாமன். அங்கே அசுரர்களுடன் பதுங்கி இருந்த இரண்யாக்ஷுடன் போரிட்டு அவனை வதம் செய்தார். அசுரர்களை பற்றிய பயம் நீங்கி தேவர்கள் விஷ்ணுவை கொண்டாடினார்கள். ஹிரண்யாக்ஷனுக்கு ஒரு சகோதரன் இருந்தான். ஹிரண்யகசிபு என்று பெயர் கொண்ட அவன் தன் சகோதரரின் மரணத்துக்காக தேவர்களை பழிவாங்க விரும்பினான். அசுரர்களுடைய தலைமையை பதவியை அடைந்து தேவர்களுக்கு சொல்லால் எனாத இன்னல்களை விளக்கினான். எல்லா அதிகாரங்களையும் பற்றி கொண்டு அவன் தேவர்களை விட்டு அடிதோடு அவர்களுக்கு சேர்ந்து வந்த அவிர்பாவங்களையும் கிடைக்காமல் தடுத்து விட்டான். பக்தர்களே, அப்படி இன்னல்கள் தோன்றியதும் தேவர்கள் மீண்டும் பரந்தாமனிடம் சென்று தங்களை காப்பாற்றுமாறு வேண்டினர். மாதவன் அவர்களுடைய நியாயமான கோரிக்கையை ஏற்று கொண்டனர். மனித உருவமும் இல்லாது மிருக உருவமும் இல்லாது இரண்டு கலந்ததாக ஒரு வடிவை கொண்டார் மகாவிஷ்ணு. கழுத்துக்கு மேல் சிம்மத்தின் தலையும் கழுத்துக்கு கீழ் மனித உருவமும் கொண்ட நரசிம்ம தோற்றத்தை எடுத்து விஷ்ணு அசுரனுடன் சண்டையிட்டு அவனை வதம் செய்தார். தேவர்கள் இழந்த பதவியை அடைந்தனர். அந்த நிம்மதியும் சிறிது காலத்துக்கே நீடித்து இருந்தது. அசுரர்களுக்கு தலைமை பூண்ட பலி என்பவன் தன்னுடைய அளவற்ற பராக்கிரமத்தால் தேவர்களை போரில் வென்று வாகை சூடினான். அவனை எதிர்த்து போராட முடியாத தேவர்கள் புருமுதுக்கிட்டு தங்கள் ஸ்தானங்களை விட்டு ஓடி ஒளிந்தனர். தேவலோகம் அசுரனுடைய வசத்தில் வந்தது. பக்தர்களே, இதோ அந்த ரக்ஷையை அந்த பகவானுடைய வலது கரத்திலேயே சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. தேவர்கள் தங்களுக்கு விஷ்ணுவை தவிர வேறு கதியில்லை என அவரிடம் சென்று முறையிட்டனர். அவர்களுடைய கஷ்டங்களை பிரிவுடன் கேட்டு பரந்தாமனும் அவர்களுக்கு ஆறுதல் வார்த்தைகளை கூறினர். கஷ்யப்ப முனிவரும் அவருடைய தர்ம பத்னி அதிதி தேவியும் விஷ்ணுவிடம் மிகுந்த பக்தி கொண்டவர்கள். பரந்தாமனே தங்களுக்கு புத்திரராக அவதரிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வெகு காலமாக வேண்டி வந்தார். விஷ்ணுவும் பின்னர் ஒரு சமயம் அவர்களுடைய விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதாக வாக்கு கொடுத்திருந்தார். பலியின் கொடுமங்களை தாங்க மாட்டாது தவிக்கும் தேவர்களுடைய அந்த துயரை துடைக்க எண்ணி அந்த சமயத்தில் முனிவருக்கும் அவருடைய பத்னிக்கும் தாம் கொடுத்திருந்த வரத்தை பூர்த்தி செய்யவும் முடிவு செய்தார் அந்த பரந்தாமன். அந்த உத்தம தம்பதிகளுக்கு புத்திரராக அந்த மகாவிஷ்ணு அவதாரம் செய்தார். மிகவும் குள்ளமான தோற்றத்தை உடைய அவரை வாமனர் என்று அழைத்தனர். அந்த சமயம் பலி ஒரு யாகத்தை தொடங்கி இருந்தான். யாகசாலைக்கு வந்து தம்மிடம் யாசிக்கும் பிராமணோத்தமர்களுடைய விருப்பத்தை அவன் மகிழ்ச்சியுடன் நிறைவேற்றினான். அதை கேள்வியுற்ற வாமனரான பகவான் பலி சக்கரவர்த்தியிடம் யாசகம் பெறுவதற்காக அவர் அரண்மனையை நோக்கி புறப்பட்டார். பலியின் அரண்மனை வாயிலை அடைந்த வாமனர் வேத மந்திரங்களை உச்சரித்தார். பிரம்மச்சாரி கோலத்தில் சிறுவன் ஒருவன் அரண்மனை வாயிலில் நின்று வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறான் என்பதை அறிந்த பலி அச்சிறுவனை உள்ளே அழைத்து வர சென்றான். அவனை வரவேற்று அர்க்யம் முதலான கொடுத்து உபசரித்தான். பின்னர் அவனை நோக்கி இரு கைகளையும் கூப்பியவனாய், குமாரரா, உன் மனதில் ஏதாவது விருப்பம் இருக்குமானால் அதை தெரிவிக்கலாம், நிறைவேற்றி வைப்பேன் என்று தெரிவித்தான். அசுரேந்திரனுக்கு அருகில் இருந்த அவனுடைய குரு சுக்கராச்சாரியாருக்கு வாமனராக வந்திருப்பது யார் என்பது விளங்கிவிட்டது. தேவர்களுக்கு உதவி செய்யும் நோக்கத்தோடு விஷ்ணுவே அவ்வாறு வேடம் பூண்டு வந்திருக்கிறார் என்பதை பலிக்கு எடுத்து கூறினார். பக்தர்களே,
சுரேந்திரா அவசரப்பட்டு எந்தவித வாக்குறுதியும் தந்து விடாதே. வந்திருப்பது சாதாரண சிறுவன் அல்ல, பரந்தாமனே இந்த ரூபத்தில் வந்திருக்கிறார். உன்னை வஞ்சித்து தேவர்களுக்கு உதவி செய்யும் நோக்கத்தோடு அவர் வந்து இருப்பதால் ஏமாந்து விடாதே என்று எச்சரித்தார். ஆச்சாரியருடைய வார்த்தையை பலியின் சிறந்த உள்ளம் ஏற்கவில்லை. பகவானே அவனிடம் யாசிக்க வந்திருக்கும் போது அதை விட பெருமை அவனுக்கு என்ன இருக்க போகிறது? அதை கிடைக்க கூட பாக்கியமா? சுவாமி, கொடுப்பதாக வாக்கு கொடுத்துவிட்டு இப்போது அதிலிருந்து பிறழ்ந்து நடப்பது சரியல்ல. அதனால் என் ஆபத்து ஏற்படுவதாக இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியுடன் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று கூறி அந்த பலி வாமனரை பார்த்து, பிரபோ, தாங்கள் எதை கேட்டாலும் தருவதற்கு நான் சித்தமாக இருக்கிறேன் என்றான். அந்த வாமனர் மலர்ந்த முகத்தோடு அவனை பார்த்து, ஹே ராஜா, நான் வேண்டுவதெல்லாம் என் காலடியில் 3 அடி நிலமே என்றார். பக்தர்களே, இதோ ஓம் யதோன்மிந்திரம் ஸ்வாஹாம் சுத்தம் சுத்தேம் சாம்னாஹ சுத்தைருக்தைர்வாஹார்தாம்சம் சுத்தாசீர்வாஹான் முக்து மயி தேவாத்ரேண மாஜந்தாம் மய்யா சிரஸ்தமை தேவோதி தேவ்யா ஹோதாராவஹிந்த பூர்வேரிஷ்டாஸ்யாம் தர்மாஸ்வீராஹ மஹ்யை ஜந்தமயான ஹவ்யாகோதி சத்யாமன சௌம்யாஸ்து உத்வன்யமானமஸ்யாமேధ్యాం బాప్మానం యజమానస్య హంతు పూతహృదయన జాతవేద భువనశ్రేతే ఇహ సంచతపసోజ నిషదే అగ్నిమస్వత్థాదివ్యోమి పునఃస్కందేభ్యో అభ్యంబణ ప్రజానన్ ఆయు ప్రయాగమరేమస్మాహృదేహ శ్రోదే దేవనోద్రోణి ఐదేని మన్యస్వానుమతేని మన్యస్వా సరస్తేని మన్యస్వా దేవసవితప్రస్వా బ్రహ్మజ్ఞానం పదం ప్రసాదశ్రీమస్రచ వేనావః సబుద్ధ్యాప్మా స్విష్టా సశ్చరణమతశ్చివః ఓం భూ బ్రహ్మాణమావాహయామి ఓం భూ ప్రయాజమావాహయామి ఓం స్వ పితామహమావాహయామి ఓం భూర్భువః స్వః హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మణేన మైదమాసనం సోమోధేనుం సోమార్వంతమాసం సోమ వీరం కర్మణం దాతు సాధన్యం పృథగం ధవేం పితృశ్రవణం యదా తస్మై ఓం భూ సోమావాహయామి ఓం భూరజ్ఞాంగమావాహయామి ఓం స్వ ఇందుమావాహయామి ఓం భూర్భువః స్వః చంద్రమావాహయామి సోమస్యేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతాపధ్యేత్తన్నాగస్సువిష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుధామిత్రలోకస్తత్రిమం విఘ్నం యజమాంసదే ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతాపధ్యేత్తన్నాగస్సువిష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుధామిత్రలోకస్తత్రిమం విఘ్నం యజమాంసదే ఓం ప్రోక్ష పవిత్రేః స్థో వైష్ణవ్యేస్థో అగ్నేః వాయుభూతేస్థో విష్ణోర్మనసా భూతేస్థో యజ్ఞస్య పావనేస్థః పరశురసి పవిత్రేః స్థో వైష్ణవ్యో దేవ సవిద ప్రసపనాత్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోత్సూర్యస్తరస్మిరాపో దేవీరగ్రే పువోగ్రే పువోగ్రేం యజ్ఞం నేతాగ్రే యజ్ఞమతిం దత్తయుష్మానింద్రోణుత్తూర్యే విష్ణువాయ మహావిష్ణువా సదా విష్ణువాం వ్యాపనారాయణమావాహయామి బ్రహ్మణ్ణవ ప్రణేష్యామి యజమానవాతం యచ్చ ప్రణయజ్ఞం దేవతావధ్యత్తన్నాగస్సవిష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుధామిత్రలగస్తత్రిమం విఘ్నం యజమాంసదేహి ఓం ప్రణయ సోమవ ప్రణేష్యామి యజమానవాతం యచ్చ ప్రణయజ్ఞం దేవతావధ్యత్తన్నాగస్సవిష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీణాగం సుధామిత్రలగస్తత్రిమం విఘ్నం యజమాంసదేహి ఓం ప్రణయ కోవ ప్రణయతు సవ ప్రణయత్వాపో దేవే ప్రణయానయజ్ఞం సంసాదయంతనః దక్షప్రదో బ్రాహ్మణ్ తీర్థేన ప్రజాత్మావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమావాహయామి సోమావాహయామి అగ్నిశోమావాహయం ప్రజాత్మావాహయం బ్రహ్మాణమావాహయం ఇంద్రమావాహయం వసోనావాహయామి మరుతమావాహయామి రుద్రాణావాహయామి అవాపస్పృశ్య ఓం శ్రీ మహావిష్ణుమావాహయం బృహస్పతిమావాహయం మిత్రమావాహయం వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి అశ్వినామావాహయం భూషణమావాహయం కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమావాహయామి ఔపాసన యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజవాగే ప్రజాపతిష్టనపామి ఇంద్రాష్టనపామి అగ్నేష్టనపామి సోమాష్టనపామి అగ్నేష్టనపామి సోమాష్టనపాగ్ని సోమాభ్యాంజష్టనపామి ప్రజాపతిష్టనపామి బ్రహ్మణేష్టనపామి ఇంద్రాష్టనపామి వసుభ్యోష్టనపామి మరుద్భ్యోజష్టనపామి రుద్రేభ్యోజష్టనపామి ఔపాపస్పృశ్య ఓం శ్రీ మహావిష్ణువేష్టనపామి మిత్రాష్టనపామి వరుణాష్టనపామి ఆదిత్యేభ్యో జిష్టనపామి అశ్వభ్యాంజష్టనపామి భూష్ణేష్టనపామి కక్షాష్టనపామి కక్షదే సోమాష్టనపామి ఔపాసన యజ్ఞాష్టనపామి యజ్ఞదే విశ్వేభ్యో దేవేభ్యోష్టనపామి సర్వదేవేభ్యోష్టనపామి
आज्यं प्रतिश्रियामि चरुं प्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समिधस स्वाहा अमृतं स्वारुणुसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्परिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सवितापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण मूलाग्राभ्यङ्कृतं स्पर्शयित्वा शतं च सहस्रं चायुतं च नीतं च प्रेतं च अद्भुतं च निर्भुतं च समुद्राष्टमं वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः वीरप्रसे नमः पंचरासे नमः विसर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा षष्ठशतसहस्राः निसमक्षयमर्भरमाणय ऐन्द्रियत्मा जातवेदस्तेने द्वस्य बद्धे जयद्वद्धे जास्वान् प्रज्ञा पशुब्रह्मवत्सेनान्नाद्येन समेध्य अस्मिन् औपासनादिगुण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आधास्ये आधस्वा समेध्य स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा निरित्याधीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्या श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याग स्वाहा भूषणे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञेदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुगस्थाः नमतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिविरोक्तिविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातरणात् प्रायश्चार्थमतो देवादिवैष्णवो मोक्षे ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि वदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्या तदधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः व्रतानि वसुसे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुगस्थाः नमतेन मुगस्थाः सरस्वतेन मुगस्थाः देवदेवतः प्रासावीः
श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमहदविष्टाख्य सप्तावर्णीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनालोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रदीकाख्याष्टदिग्दण्डि सुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती शावती इत्यष्टदे उपरि विराजिते इन्द्राग्नि यवनिऋत्य वरुणवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तान्नवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्च सागसान्मणि पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृष्टमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतु कमालगरवणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेकजन्मसु ह्यजन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामादि सङ्घातवकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्यां तलैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतलापकर्षणक्रमेण सर्वराष्ट्रपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिराप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजवीयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरूपगुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादिवृत्तग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंबित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत
नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवच्चवन अप्नुवान और्व वैदल पंचार्षे पुराणिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मिकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सार नैध्रव त्रयार्षेय प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्यीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा षड्गुण्यः सर्वदेवताः इवां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथ कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु திருமலை வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம் பெருமான் திரு கல்யாணத்தில் பிராட்டிமார்களுக்கு கன்யா தானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்த நிகழ்வு திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக இன்று தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை மஞ்சள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்கள் அனைத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை பின்பு அந்த திருமாங்கல்யத்திற்கு மஞ்சள், குங்குமம், நறுமணமான பூக்கள் மற்றும் அனைத்து மங்களகரமான புஷ்பங்களையும் பூஜை செய்து அதை பகவான் முன் வைத்து பின்பு அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இந்த நல்ல விஷயங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். வேதங்கள் 4: ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், சமவேதம், அதர்வண வேதம். அந்த எம்பெருமானின் திருவாயால் பிரம்ம தேவர்களுக்கு அருளப்பட்டது வேதங்கள். இந்த வேதத்துக்கு ஆபத்து வரும் போதெல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ ஹயக்ரீவராகவும் மத்ஸ்ய அவதாரமாகவும் எடுத்து ரட்சிப்பார். அத்தகைய உயர்வான வேதத்தை சொல்வதும் கேட்பதும் கொஞ்சம் சிரமம்தான். ஆனால் கேட்க வேண்டும் என்று எண்ணம் வருவதே ஏற்றம்தான். வேதம் சொல்லுவது என்னவென்றால், எப்போது வேதத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்குள் வருகிறதோ அப்போது நாம் அந்த பகவான் நம்மை பார்த்து விட்டார் என்று அர்த்தமாம். வேதத்தை கேட்க ஒருவருக்கு இஷ்டம் இல்லை என்றால் அந்த பகவானுடைய கருணா கடாட்சம் அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றுதான் அர்த்தம். அப்படி பகவானிடத்தில் துவேஷம் என்றால் கூட பகவான் பொறுத்து கொள்வாராம். ஆனால் வேதத்தின் மீது துவேஷம் வந்தால் பகவான் அதனை பொறுக்க மாட்டாராம். நரசிம்ம அவதாரத்தின் போது பகவானே இதை அருளி உள்ளார். எவன் வேதத்தை நிந்திக்கிறானோ அவன் சீக்கிரமாய் அவன் அனுபவிப்பான் என்று அர்த்தம். தெரியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, வேதத்தை கேட்க வேண்டும். இப்போ நாம் ஹோமம் பண்ணுகிறோம் அல்லவா, அவர் சொல்லுகின்ற அந்த மந்திரத்தின் பொருள் தெரியுமா? இருந்தாலும் ஹோமம் பண்ணுகின்ற பலன் கிடைக்கிறது. உபநயனத்தின் போது பவதி பிக்ஷாம் தேகி என்கிற மந்திரம் சொல்லி தரப்படுகிறது. அதன் பொருள் அவனுக்கு தெரியாவிட்டாலும் அவன் இல்லத்தில் முன் சென்று அதனை சொல்லும் போது அவனை பாத்திரம் நிறைகிறது அல்லவா. அப்படி அந்த அர்த்தம் இவனுக்கு தெரியாவிட்டாலும் அவன் வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு புரிகிறதே.
அதேபோல் ஹோமத்தின் போது சொல்லப்படும் அந்த வேத மந்திரத்தின் பொருள் அதை சொல்லுபவர்களுக்கோ செய்பவர்களுக்கோ தெரியாமல் போனாலும் யாரை குறித்து சொல்லுகிறோமோ அந்தந்த தேவதைகளுக்கு புரிகிறது அல்லவா. அவர்கள் ஓடி வந்து நாம் கொடுக்கும் அவிசையை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய இஷ்டத்தை பூர்த்தி பண்ணுகிறார். அப்படி தெரிந்தோ தெரியாமலோ வேதத்தை மனசு பூர்த்தியாக நாம் கேட்க வேண்டும், சேவிக்க வேண்டும். ஆரம்ப காலத்தில் சிந்து நதி கரையில் முனிவர்கள் வேதங்களை உருவாக்கினார்கள். பின்னர் தலைமுறையாக இதை செவியில் கேட்டுக்கொண்டு வந்தார்கள். இதை கருணன் பரம்பரை என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் இதை தொகுத்தவர் யார்? வியாச பகவானே அல்லவா. ஆகவேதான் அவரை வேத வியாசர் என்று போற்றப்படுகிறோம். பக்தர்களே, இதோ அந்த உபய நாச்சிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி அது புஷ்பங்களாலும் மங்களம் நிறைந்த அனைத்து பொருட்களாலும் பூஜித்து இப்பொழுது அதை அவரது ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சாவித்ரி சுமங்கலீர்யம் மதோரிமாகும் சமேதவஸ்யதா சௌபாக்யமத்வை தத்வாஜாதாஸ்தம் விபரேதனாம் ஸ்ரீயே ஜாதஸ்ரீ ஆனிர்யாய ஸ்ரீ அம்பஜோதிரதிருभ्यो தாதி ஸ்ரீ அம்பசானாமிருதத்தமாஜன் भवन्ति सत्या समिधां दद्रौ माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्ता मुगं राजानमसृजत तंत्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जातास्तं विपरेतना मेदिनी देवी वसुन्धरी स्यात् सदा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं जक्षर्मणः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేనా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేనా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేనా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేనా.
అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి సింధులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. శ్రీపుత్రభన్నరోధా స్వాహ ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగార్హపత్య ప్రజాముంచముత్యభాషాద్ తదేకం రాజావరుణ్ మన్యతామధేగు స్త్రీపుత్రభన్నరోధా స్వాహ ఇమం మే వర్ణస్య దేహో మద్వాచముడియా తాం వత్సరాచకే స్వాహ తత్వాయాం బ్రహ్మణా వందమానస్దాశాః స్తేజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వర్ణయః బోధర్హిం సమాన ఆయుః ప్రమోషి స్వాహ తన్నోగ్నే వర్ణస్య విద్వాన్ దేవస్యేడవయాశ్రేష్టాః యజుష్ఠः పండితమస్సోహిదానో విశ్వాద్వేషాగుంసి ప్రముత్య స్వాహ సత్తన్నోగ్నేయమో భవతి నేది స్వస్యావసో వ్యక్తౌ అవయక్షుణ వర్ణగమ్రాణో విహిమృడేగం సహో నేది స్వాహ త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసా ఇతః అయాసన్ హవ్యమూచేయానో దేహి వే జగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ అదే నమగ్రస్థాః నమతే నమగ్రస్థాః సరస్తే నమగ్రస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీ. ఓం భూవతి పురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే ఐదేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవసవిధ ప్రసవ ఇమాం లాజాంతి ఆజ్ఞాభియాజ్యా. ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుభ్రూతేऽగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాజసా స్వాయుషో దోహదేనాగుంసేనోత్పర్జన్యస్య కృష్ణేనో విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహేమహేద్యుషః ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుభ్రూతే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాజసా స్వాయుషో దోహదేనాగుంసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామనురాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహేమహేద్యుషః ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుభ్రూతే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాజసా స్వాయుషో దోహదేనాగుంసేనోత్పర్జన్యస్య కృష్ణేణోదస్థామనురాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహేమహేద్యుషః. ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ ఐదే నమగ్రస్థాః నమతే నమగ్రస్థాః సరస్తే నమగ్రస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీ. ఓం భూః అతిపురోక్తిమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే స్వరమంతరేపర్యాతనునాథప్రాయస్తాథం అతో దేవాది వైష్ణవం హోష్యే ఐదేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవసవిధ ప్రసవా. ఓం మతో దేవాః వందనదా విష్ణుచక్రమే దివ్యా సప్తధాం విస్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధాని దేవతం సమూఢమస్వాగం శ్రే స్వాహ త్రిణిపదాచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యా తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి వసుదేదోః వృదాని వస్వేంద్రస్య సఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా ప్రసంసూర్యః దివీవచక్షురాదగ్గు స్వాహ తద్విప్రాసో పుణ్యమో జార్ధ్రువాగం తత్సవిందతే విష్ణోదిత్రం పదగ్గు స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ ఐతే నమగ్రస్థాః నమతే నమగ్రస్థాః సరస్తే నమగ్రస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీ. ఓం భూః అతిపురోక్తిమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం కర్మసాఫలం పరిష్టాతంత్రం కరిష్యే ఐతేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవసవిధ ప్రసవా యతస్య కర్మణోత్తీరితమిద్యానో నమహాకరం అగ్నిష్టం కరోతు స్వాహ అగ్నే సృష్టకృతే శ్రుతావతావతీనాం కామానాగ సముద్రిత్రే స్వాహ అగ్నే స్వాహ అగ్నే నాదాయ స్వాహ అగ్నే నమదే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టం సర్వత్రైవానాష్టం దేవతముష్మే స్వాహ అగ్నే సృష్టకృతే స్వాహ వాస్తుపదే నమో వాస్తుపదే స్వాహ యన్మాత్మనం ఇందాభూదగ్నిస్తత్వనరాః జాతవేద విచర్షిణి స్వాహ పునరగ్నిశ్చక్షురాత్ పునేంద్ర బృహస్పతి పునర్మ్యాశ్వాజ్వం జక్షాత్ముక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వసునిష్టేభ్య స్వాహ భేషం దృష్టే స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ ద్యోరాధ్యై
स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कृतमत्यनो कञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मण क्षेनमग्न्यः पर्वान् पुण्यकल्पयन् स्वाहा कृता देवान् स्वाहा स्वस्ति न इन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा शुभेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्टेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा एधोऽस्य धीमहि स्वाहा समिधसि तेजोस्तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्तदेवं पाहि स्वाहा सूर्यसधीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमसधीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्त स्वाहा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्दी सप्तयोनिरावृणस्वाहुतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं प्रतिभुक्तं वौषधे वनस्पतिगन्धर्वासस्य भुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवोर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वौषधे वनस्पतिगन्धर्वासस्य जीर्णं समन्तां भविष्यावतेन समादित्यै दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा सप्तते अग्नि समिध सप्तैः सप्तर्ष सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्दी सप्तयोनिरावृणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्या स्त्रिप्यन्ताम् ओषधे वनस्पतिगन्धर्वास्य तृप्यन्ताम् यदक्षप्रदामः साक्षीमस्तृप्यन्ताम् ऐतेन मग्रस्ताः हनुमतेन मग्रस्ताः सरस्तेन मग्रस्ताः देवसवितः प्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् मे चेष्टाः प्राचाहान्ति देवार्तिकमार्ग्यन्ताम् प्राच्यां विष्णो सदनमसि सर्वान् समूष्यां ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषधयो अमृतां ऋषदयस्तदिवं गच्छतो नौरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कसवस्य त्र्यायुषं त्रिद्रेवानाहान् त्र्यायुषं तन्मयस्तत्र्यायुषं दीर्घायत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्तसे त्र्यायुषं दीर्घायत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्तसे त्र्यायुषम् आबोहिष्टामय भोस्तानवोचेदादना महेरणा चक्षे योगस्वदमार्गस्तस्य भाजयतेन उषतीर्यो मात्रः तस्माहरङ्गमावो शिष्या जन्मधा आपो जनेधाजनः यत्यग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासमत्यग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासमस्ते हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्धातो दातु योक्षसूर्यं दृशे यवदगान्मातोर्नवाः दुर्गाजमानस्य समध्या समावृषभोरो यदाक्षसूर्यो बस्सन्मनसा पुनातु वोञ्च मे सदश्च मे यज्ञोपते नमश्च यत्तेः ज्ञानं तस्मै ते नमः कायेन वाचा मसेन्द्रियैर्वारुध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोभारं निवेदयामि आज्ञोभारं निवेदयामि अग्निम आदित्यम पगच्छ सर्वं श्रीभूनिरासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ గోవింద గోవింద
பக்தர்களே, இந்த மலையப்ப சுவாமியுடைய திரு கல்யாண மகோத்சவத்திலே தேவதைகளின் முன்னிட்டு நடைபெறும் ஹோம காரியங்களில் லாஜா ஹோமம், அதை தொடர்ந்தாற்போல் பூரணாஹத்தி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வு குங்குமமப்பி குளிர் சாந்தம் மட்டித்து மங்கள வீதி வலம் செய்து மணநீர் அங்கவனோடு முடஞ்சென்ற காணை மேல் மஞ்சன மாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அதை தன் நண்பர்களிடம் கூறுவதாக சொல்லுகிறார். அதே இந்த வாரணம் 1000 என்பது. இதில் 10 பாசுரங்கள் உள்ளன. அந்த பாசுரத்தை தினமும் நடைகின்ற திரு கல்யாணத்தின் போது தேங்காய்களை உருட்டி கொண்டு விளையாடும் இந்த நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. எத்தனை அழகான பாசுரங்கள்! நாமும் அந்த ஆண்டாளையும் சேவிப்போம். பக்தர்களே, அடுத்த நிகழ்வு மாலை மாற்றுவது என்பது இனிமையான கட்டம். வெங்கடகிரி என்று அழைக்கப்படும் திருமலையில் 7 மலையாக ஆனது சப்தம். சப்தம் என்றால் 7 கிரி என்றால் 7 கிரி, அதாவது மலை. பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற நிகழ்வை காண உள்ளோம். நமது நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான அந்த பகவானுடைய திரு கல்யாணத்தில் தம்பதிகள் திருமணம் போது தம்பதிகள் ஒருவர் சூடிய மாலையை இன்னொருவர் அணிவது. அந்த ஆண்டாள் பிராட்டி தனது நாச்சியார் திருமொழியில் கொல்லாலானிரை வைத்து ஆயனாக என்கிற பாசுரத்தில் அவன் அணிந்திருக்கும் குளிர்ச்சியான மனம் கவலும் திருத்துழாய் மாலைகளை கொண்டு வந்து எனக்கு சூட்டுங்களே என்று கேட்டாலாம். இதோ அவளது விருப்பம்படி நமது கண்ணனையே திருவேங்கடவன் சூடிய புஷ்ப மாலை முதல் அவரது திருமார்பில் அகலாது வீற்றிருக்கும் பெரிய பிராட்டிக்கு போய் சேர்ந்தது. அந்த பிராட்டி சூடிக்கொண்ட மாலை பிறகு பகவானிடமே வந்து சேர்ந்தது. இதோ இப்போது ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியாருக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. தேவிகளின் மேனி சுகந்தையோடு கூடிய புஷ்பத்தை பெருமானின் தோள்களில் வந்து சேர்த்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. அடுத்து தாயாரை இருவரையும் பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீ பூ சமேத பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். பக்தர்களே, மூவரையும் ஒரு சேர் சேவிக்க இருக்கும் பாக்கியங்களை பெற்றுள்ளோம். இதை அடுத்து அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனது. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.